Dear students, we were doing inner product spaces, and today in inner product spaces we will study the concept of norm of a vector. How will you define norm of a vector? So definition of norm of a vector is let V be an inner product space. So सबसे पहली requirement is V should be an inner product space. Then for any vector V belongs to V, the norm is called length also. ठीक है, norm का मतलब length. So length हम vector spaces में किसी भी vector की या inner product space में किसी भी vector की कैसे define करेंगे? It is defined as under the root inner product of V with V, or it can be written as 2 double mod with V. It is denoted by this norm of a vector. Norm means length. So norm of vector is equal to under the root inner product of V with V. So this is the definition. What is norm? Norm means length of a vector in an inner product space. So let us now do a question based on the norm of the vector. So question based on norm of the vector. Let us find norm of the vector 2, -3, 6 and then normalize it. So सबसे पहले what is normalization? Normalization means सबसे पहले आपने क्या u upon norm of u. This is called normalization of a vector. So सबसे पहले how to find norm of u? Norm of u is equal to under the root inner product of u with u. So हम कैलकुलेट करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ u with u. So इनर प्रोडक्ट ऑफ u with u हमने डिफाइन किया था. इट इज 2, अब u के साथ u इंटू 2 कॉन्जुगेट प्लस -3 इंटू -3 कॉन्जुगेट प्लस 6 का कॉन्जुगेट. सो इट इज 2 इंटू 2 कॉन्जुगेट इज अगेन 2, -3 इंटू -3 अगेन -3, रियल्स का कॉन्जुगेट सेम रहेगा, 6 इंटू 6. सो इट इज 4 प्लस 9 प्लस 36. सो इट इज 49. क्लियर? सो नॉर्म ऑफ u इज अंडर द रूट 49. सो इट इज 7. सो नॉर्मलाइज जब हम करेंगे, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज वेक्टर इज नॉर्मलाइज वेक्टर is equal to u upon norm of u. So this is equal to 2 upon 7 minus 3 upon 7 and 6 upon 7. So this is how you will find norm of a vector and how to normalize the vector. Clear? Students, next is very important theorem, that is Cauchy-Schwarz inequality. So you have to remember the statement of this theorem also is inequality also. So statement is let V be an inner product space. This is given to you. Then you have to prove modulus of inner product of u with V is less than or equal to norm of u with norm of V for all uv belongs to inner product space capital V. ठीक है? So how will you prove this? So proof of the theorem. Proof में सबसे पहले let us consider, अब आपके पास ये सारे u और v जो v में है उनके लिए true है, तो ये u0 और v0 के लिए भी true होगा. So let us take this first case for u equal to 0. So let suppose u is 0. If you have u0, then this implies inner product of u with v is 0. ये हमने प्रॉपर्टी की थी. अगर आप 0 के साथ किसी भी इनर v का किसी भी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हो, you will get 0. So this further implies modulus of u with v inner product is 0. So left hand side is 0. Next also, if u is 0, then this implies inner product of u with u is 0, which further implies norm of u square is 0. ठीक है, क्योंकि आपके पास norm of u क्या है, this is equal to under the root inner product of u with u. So अगर आपके पास inner product of u with
implies norm of this square is 0. और अगर ये norm square 0 है, this implies norm of u is 0. So आपके पास right hand side भी 0 हो गई. So this implies inner product of u with v modulus is equal to norm of u into norm of v. So theorem is satisfied. This inequality is satisfied for u equal to 0. Similarly, for v equal to 0, norm of modulus of inner product of u with v is equal to norm of u into norm of v. So अगर आपके पास u और v 0 है, this inequality is satisfied. Let us consider when u is non-zero. If u is non-zero, then this implies modulus of norm of u is also non-zero. Because क्या reason लिखोगे? Because if norm of u is 0, then this implies inner product of u with u under the root is 0, which further implies inner product of u with u is 0. And this further implies अगर आपके पास किसी भी inner product का u with u 0 है, तो this is only possible when vector itself is 0. This implies u is 0. So this cannot be possible कि अगर आपके पास u non-zero है तो उसकी norm 0 हो जाए. तो if u is non-zero, then norm is always non-zero. Clear? So अगर आपके पास u non-zero है, then it must be non-zero. So let us now define a vector w belongs to vector space v such that w is equal to v minus lambda times u, where lambda is a scalar, where lambda belongs to the field. अब जो scalars हैं वो field में होंगे और u v कहाँ पे होंगे? Vector inner product space v में. These are the vectors. So where lambda is a scalar, so आपके पास मैंने आपको पहले बताया था कि इनर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो इनर प्रोडक्ट ऑफ, इसको डिफाइन कर देते हैं v विद u. दिस इज v विद u अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर. ठीक है, विच इज फर्दर, दिस इज v विद u, विच इज फर्दर इक्वल टू u विद v कॉन्जुगेट. ठीक है, अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बिकॉज v इज इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से v u का कॉन्जुगेट किसके इक्वल, v u किसके इक्वल लिख सकते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ u v. क्लियर? सो आपके पास लैम्डा इज डिफाइंड एज दिस. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर स्पेस w. Let us now calculate inner product of w with w. So what is w? W is v minus lambda times u, comma v minus lambda times u. So this is equal to inner product of v with v minus inner product of v with lambda u minus inner product of lambda u with v plus minus plus inner product of lambda u with lambda u. Clear? So let us now calculate this. This is inner product of v with v. ठीक है, so it is norm of v square. Norm of v की क्या definition थी? Norm of v is equal to under the root inner product of v with v. So inner product of v with v is norm v square minus, अब यहाँ पे जो लैम्डा है स्केलर जो है वो सेकेंड वेक्टर के साथ है, तो जब आप बाहर लेके आओगे इनर प्रोडक्ट से तो इट कम्स आउट विद कॉन्जुगेट. सो इट इज लैम्डा कॉन्जुगेट v विद u माइनस लैम्डा u विद v प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा कॉन्जुगेट u विद u. क्लियर? सो उसके बाद दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस लैम्डा कैन कॉन्जुगेट v with u minus lambda u with v minus lambda into lambda conjugate norm of u का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे v into u क्या गिवन है?
दिस इज लैम्डा टाइम्स नॉर्म यू स्क्वायर. सो यहां से हम यहां पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं. सो लेट अस टेक दिस एज नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस लैम्डा बार कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा टाइम्स norm of u square minus lambda into norm of uv minus lambda into lambda conjugate norm of u square. Sorry, this is plus. Clear? So अब यहाँ पे ये lambda conjugate lambda into norm u square और ये cancel out same है. So you are left with only norm of v square minus lambda times conjugate of u, sorry, inner product of u with v. Again put the value of lambda as conjugate uv inner product. So this is equal to norm of v square minus lambda. lambda की वैल्यू डाल रहे हैं. lambda की वैल्यू क्या है, ये वाली ना डाल के मैं uv conjugate वाली डालूंगी. So it is u. अभी आपको बता रही हूँ कि ये मुझे मैंने यही वैल्यू क्यों चूज की instead of vu, inner product of vu. Why I have taken this into vu. Clear? So आपके पास अब क्या आ गया, you are end up with this. अब यहाँ पे आपके पास norm of v square as it is, this is norm of v square minus, अब यहाँ पे z into z conjugate, आपके पास एक वेक्टर और उसका कॉन्जुगेट. तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस. दिस इज मॉडुलस ऑफ यू वी का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर. दिस यू विल गेट एंड दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ w with w. दिस इज द रिजल्ट हियर. क्लियर? So we have inner product of w with w is equal to this. Since we are working in inner product space, तो हमारे पास second property inner product space की क्या थी, अगर आप किसी भी वेक्टर का inner product वेक्टर के साथ लेते हो, this is always greater than or equal to 0. So हम ये वाली प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे. We have a vector w in inner product space v. तो आपके पास इन दोनों का जो inner product होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहां लिख सकते हो बिकॉज v इज इनर प्रोडक्ट स्पेस. क्लियर? सो आपके पास क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ w विद w इज दिस. सो इट इज नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ uv मॉडुलस स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर is always greater than or equal to 0, which further implies norm of v square into norm of u square is greater than or equal to modulus of inner product of u with v whole square. So this further implies modulus of uv, inner product of uv is less than or equal to norm of u into norm of v for all vectors uv belongs to inner product space v. So this is Cauchy-Schwarz inequality, very important inequality in inner product spaces. Students, Cauchy-Schwarz inequality के लिए ही ये जो inequality है, ये अगर equality हम ले लें इसका, it will become equality if and only if u and v are linearly dependent. Linearly dependent vectors are those which are scalar multiples of each other. They are depending on each other. ठीक है? So अगर आपके पास linearly dependent आपने prove करना है तो you have to prove u is scalar multiple of v. u is lambda times v, where lambda is a scalar. So we have to now prove this. So equality, let us suppose if and only if result है. So let us suppose the equality is equal. Inequality जो हमारे पास है, it will become equal. So let, what is Cauchy-Schwarz inequality? This inner product is less than or equal to. So अब हमने उसको क्या ले लिया, equal is equal to norm of u into norm of v. So this we have taken, they are equal. So आपके पास क्या होगा, अगर ये equal हो गई तो हमने last time
जो थ्योरम की थी वहां पे हमने क्या लिया था, इनर प्रोडक्ट ऑफ W विद W, और W को हमने क्या डिफाइन किया था, a vector W belongs to inner product space V is equal to V minus lambda times U. This we have defined, and we have calculated inner product of W with W, which is equal to norm of V square minus inner product of U with V modulus square upon norm of U square. This we have taken. क्लियर, ये हमने कैलकुलेट किया था. सो अब आप क्या करोगे, ये इनइक्वालिटी इक्वल है, इसकी जगह वैल्यू डाल दोगे इसकी, तो यू हैव नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर माइनस पुट हेयर नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इनटू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर. सो व्हाट विल यू गेट दिस एज नंबर 1. यहां लिख लो यूजिंग 1. ठीक है, सो आपके पास क्या आ गया, दिस कैंसल्स विद दिस, सो यू विल गेट 0. सो यू हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर इज 0. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ वेक्टर इटसेल्फ इज 0. सो दिस इंप्लाइज वेक्टर इज 0. और अगर आपके पास वेक्टर 0 है तो वेक्टर W क्या था, V माइनस lambda U is 0. So this implies V is equal to lambda times U. So यहां से ये क्या हो गया, U and V are scalar multiples of each other. So this implies V and U are linearly dependent vectors. So one side it is proved कि आपके पास अगर इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी हमने ले ली है, तो U और V क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. नाउ द रिवर्स पार्ट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो दिस इनइक्वालिटी विल बिकम इक्वालिटी. क्लियर. कन्वर्स पार्ट, लेट अस सपोज U and V are linearly dependent vectors. अगर आपके पास U और V linearly dependent vectors हैं, this means A is some scalar multiples of U is scalar multiple of V, where A is a scalar belongs to field F. We have to prove the inequality will become equal. Means we have to prove inner product of V with U mod क्या हो जाएगा आपके पास, equal हो जाएगा norm of U के और norm of V के. This we have to prove. So let us now calculate, or you can say square of this is equal to square of these. ठीक है. So let us now calculate inner product of U with V first. फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे. So inner product of U with V. U is A times V into V. So it is A outside, inner product of V with V, which is equal to A norm of V. Clear? So let us now take modulus of this. So it is modulus, scalar का modulus into norm. Norm is always positive, so it remain as it is. So this is number, let us say star. ठीक है. अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्म ऑफ U इंटू नॉर्म ऑफ V. क्लियर. सो व्हाट इज नॉर्म ऑफ U? नॉर्म ऑफ U इज नॉर्म ऑफ A टाइम्स V इंटू नॉर्म ऑफ V. लेट अस नाउ कैलकुलेट नॉर्म ऑफ A इंटू V. नॉर्म ऑफ A इंटू V इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दिस कैन बी रिटन एज norm of A, inner product of AB with AV. Clear? So this is equal to A into, यहां से A आएगा as it is, यहां से स्केलर बाहर आएगा conjugate. So V into V. Clear? So this is equal to modulus A square. A into A conjugate is modulus of A square, and V into V inner product is norm of V square. Clear? So what is norm of AV? It is equal to modulus of A into norm of V. So let us put this into here. So it is norm modulus of A into norm of V into norm of V. Clear? So what will you get? This is norm of V square. Inner product of V with V is norm of V square. This is V square. So what will you get? Modulus of A into norm of V.
square. This has double star. So आप अगर देखो स्टार और डबल स्टार से you have proved that inner product of u with v का mod किसके इक्वल आ चुका है? norm of u with v के इक्वल. So this inequality become equality when u and v are linearly dependent vectors. So this completes the theorem as well as the important remark associated with this Cauchy-Schwarz inequality. Clear? Students, question based on Cauchy-Schwarz inequality. Using Cauchy-Schwarz inequality, prove that in a unitary space Vn over field of complex. This is field of complex numbers. अब unitary space क्या है? Inner product space is unitary space if the field, अगर आपके पास field जो आपने fix की थी over the vector space V वो complex numbers है की है. अगर तो ये complex numbers की है then it is called the inner product space is known as unitary space. ठीक है, the field is complex. और अदरवाइज अगर ये फील्ड रियल नंबर्स पे है तो इट इज यूक्लिडियन स्पेस. ठीक है, सो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है. व्हाट इज यूनिटरी स्पेस? यूनिटरी स्पेस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस बट द फील्ड इज डिफाइंड ओवर कॉम्प्लेक्स. जो फील्ड है दैट इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, सो यू आर वर्किंग इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तभी तो आप Cauchy-Schwarz inequality यूज कर रहे हो. So if u is this vector and v is vector that's given to you, then you have to prove this relation. और लिखा है using Cauchy-Schwarz inequality. So Cauchy-Schwarz inequality आपके पास क्या है? Inner product of uv mod modulus of uv का inner product is less than or equal to norm of u into norm of v. This is by Cauchy-Schwarz inequality. अब अगर ये इससे लेस है तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ u विद v मॉडुलस का स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस नॉर्म्स ऑफ u एंड नॉर्म ऑफ v. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस पार्ट एंड नॉर्म ऑफ u, नॉर्म ऑफ v. सो फर्स्ट वी विल फाइंड inner product of u with v. Inner product of u with v is defined as x1 into bar of conjugate of this y1 bar, x2 into conjugate y2 plus so on xn into conjugate yn. So यहाँ पे this can also be written as summation में अगर हम इसको लिखें, summation किसके ऊपर है? I 1 2 3 up to n और y I 1 2 3 up to n. So it is y 1 to I 1 to n. और मॉडुलस अगर हम ले लें इसका, so modulus of uv is equal to modulus norm summation I1 to n xi yi mod square ले ले तो, so this is modulus inner product of uv is equal to modulus I1 to n xi yi conjugate का whole square. This is star. Now let us calculate norm of u. So what is norm of u? Norm of u square ले लेते हैं. It is inner product of u with u. Clear? Because norm of u की definition क्या थी? Norm of u is under the root inner product of u with u. This is definition of norm. So norm of u square is inner product of u with u. So u with u means xi bar same element u का plus x1 x2 bar x3 bar and so on. So it is xn bar. So आपके पास x1 उसका conjugate, x2 उसका conjugate, x3 उसका conjugate. So you will get this is equal to what is this? Modulus x1 modulus x2 square so on modulus xn square. This can also be written as summation xi modulus का whole square I1 to n. So this is inner product of u with u or you can norm of u square. Now let us calculate norm of
V square. This has double star. Clear? So norm of V square is inner product of V with V. So inner product of V with V is y1, y1, y1 conjugate, y2, y2 conjugate, and so on, yn conjugate. This can be written as modulus y1 square, modulus y2 square, and modulus yn square, which can also be written as in summation from yi modulus ka whole square I 1 to n. So let us take this as 3 stars. So आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया modulus of inner product of uv का square, norm of u square, and norm of v square. So let us now put these values in 1. So putting star, double star, and triple star in 1, what will we get? We get modulus xi yi conjugate I1 to n whole square is less than or equal to modulus, not this, modulus I1 to n modulus I xi square into summation I1 to n modulus yi whole square. So this we will get. So यही आपको प्रूव करना था. It is summation 1 to n modulus xi y bar का whole square is less than or equal to summation I1 to n modulus xi square into summation I1 to n modulus yi का square. So this completes the question based on Cauchy inequality. So next time we will do some more theorems on the same topic, inner product spaces. So thank you for watching the video.